we have to This call is now being recorded. वो जो डेटा है वो हमको वापस लाना है जो लॉस हुआ था. Okay, that is the meaning of recovery. So there are various types of failures. Okay, so we had seen this, but once again I am going to tell you transaction failure, system crash, and disk failure. Three types of failures are there. Okay, so which are those? Transaction failure, system crash, and disk failure. So transaction failure means logical error or system error. Logical error means there may be some error in your program, that may be data overflow, data not found. Now we had seen data not found, that exception. Okay, if that particular employee or particular student is not present in your table, and if you are searching for that, means if you are passing the parameter as a parameter, that student roll number or employee number, and if that employee is not existing in your table, then it will display you that data not found. Okay, so that is the meaning of data not found. Then that type of error or system error means deadlock is there. Okay, then these are the transaction failures. Then system crash. System crash means in this contents of RAM is lost. Contents of RAM is lost, but contents of hard disk will be as it is. Okay, hard disk के contents वैसे रहते हैं, RAM के contents lost हो जाते हैं. And this is also called as fail stop assumption. So you must know the definition of fail stop assumption. It may be asked in the MCQ. So this type of crash we have to learn into this chapter. So you have to remember कि RAM already I told you that whenever we want to do some calculations or something, insert, update, or whatever it is, what happened? First of all, we have to read the data from hard disk to RAM. Then in the RAM, all the changes or all the calculations will be there, and then again we will write down that data from RAM to hard disk. These are the three steps. Okay, basic steps. So जो RAM में डेटा है हमारा, जो RAM में है, जो हार्ड डिस्क में नहीं हुआ है, RAM में है, कैलकुलेशन हो चुका है, that data we can recover. वो lost होता है इसमें. System crash means RAM का data lost होता है. So that is called a system crash. तो उसको हमको recover करना है बाद में. Okay, so RAM के data को. And disk failure. Disk means hard disk failure. अगर आपकी हार्ड डिस्क फेलियर हो जाती है, एक डिस्क ब्लॉक कंटेंट्स आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ हेड क्रैश और फेलियर ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफर. ओके, सो बैकअप, अगर आपने बैकअप लेके रखा है हार्ड डिस्क का तो ही आपको वो डेटा फिर से मिलेगा, अदरवाइज नॉट. ओके, सो बैकअप इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द डिस्क फेलियर. Then storage types are there. Volatile storage, that is RAM. Volatile means temporary. Non-volatile means permanent storage, that is hard disk. And stable storage, you have to remember this word, that is stable storage. So information stored in the stable storage is never lost, and that is called as log. Okay, so whatever commands we will give, insert, update, delete, all those commands are get stored into that log. Now regarding mobile also we know the log. In the log, all the calls, missed calls, we have dialed calls, all these calls, information of all these calls we will get in the log. Okay, so here in regarding the database, we will get the information of all the insert, update, delete, commit, rollback, whatever commands we have given, those are stored into that log. Okay, so by using that log records, we can recover the data. Okay, so now we will see the recovery concepts. Once again, consider the simple transaction TI which transfers ₹50 from account A to account B. Okay, we are going, TI means transaction, any transaction TI which transfers ₹50 from account A to account B. The initial values of A and B are ₹100 and ₹200 respectively. Means in the account A the balance was 100 and in the account B the balance was 200. Okay, suppose the system has crashed after subtracting ₹50 from account A, but before adding ₹50 to account B. Means हमारा system crash हुआ, कब हुआ कि अब what should happen, that ₹50 should be subtracted from account A and ₹50 should be added into account B. Okay, but system crash हुआ हमारा कब हुआ कि A में से तो माइनस हो गया. System has crashed after subtracting ₹50 from account A. A में से माइनस तो हो गया, but before adding ₹50 to account B. B में अभी ऐड ही नहीं हुआ, इसके बीच में system crash हो गया. Okay, so now we can use two options. Re-execute.
या तो उसको री एग्जीक्यूट करो या तो उसको डू नॉट री एग्जीक्यूट करो. अब री एग्जीक्यूट से क्या होगा, if we re-execute that command again same, then here the system will be in the inconsistent state, that is it is wrong. Account A equal to 0 means A में से अगर हम फिर से 50 रुपीज माइनस करेंगे तो A का बैलेंस कितना हो जाएगा, 0. मीन्स अगर हम री एग्जीक्यूट करते हैं तो वी आर गेटिंग द रॉन्ग रिजल्ट. डू नॉट री एग्जीक्यूट, अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अकाउंट here value of account A equal to 50, it's okay, but account of B equal to 200. अकाउंट का 250, B का 250 चाहिए था ना, बट उसका 200 ही रहेगा. सो अगेन द सिस्टम विल बी इन द इनकंसिस्टेंट स्टेट. इनकंसिस्टेंट मींस रॉन्ग स्टेट. ओके, मींस क्या हो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, री एग्जीक्यूट करो तो भी प्रॉब्लम है, वी आर गेटिंग द रॉन्ग रिजल्ट, एंड री एग्जीक्यूट नहीं करते तो भी रॉन्ग रिजल्ट मिल रहा है. गेटिंग दिस कंसेप्ट? Suppose we are transferring rupees 50 from account A to account B. Okay, account A is balance 100 rupees and account B is having balance 200 rupees. Okay, now what should happen? 50 rupees should be subtracted from rupees 100 and rupees 50 should be added into the 200. Okay, but what happened? System gets crashed just after subtracting rupees 50 from account A. A में से माइनस हो गए, but B में ऐड करने के से पहले ही वो क्रैश हो गया. मींस A में से माइनस हो गए, B में प्लस नहीं हुए 50 रुपीज. ओके, अब इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वी कैन ट्राई री एग्जीक्यूट और वी कैन ट्राई डू नॉट री एग्जीक्यूट. अगर री एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, A में से वो ट्रांजैक्शन पूरा अगर हम री एग्जीक्यूट करते हैं TI, तो क्या होगा, A में से फिर से 50 रुपीज माइनस हो जाएंगे. तो अब A का बैलेंस कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उसके पास 50 रुपीज ही बचे थे. 100 माइनस 50 ऑलरेडी हो चुका था. ओके, तो उसके इसमें भी बैलेंस था 50 रुपीज. नाउ सपोज वी री एग्जीक्यूट इट, तो अगेन A minus 50 means 50 minus 50 it becomes 0. It is wrong, क्योंकि उसका बैलेंस 50 होना चाहिए था अगर करेक्टली कैलकुलेशन हो तो. और अगर डू नॉट री एग्जीक्यूट करते हैं तो A का बैलेंस 50 रहेगा, इट्स ओके, बट B का 200 ही रहेगा, इट शुड बी 250. Getting? So means both are wrong. Re-execute करो तो भी problem है, do not re-execute करो तो भी problem है. So now we will see the techniques on this. Okay, what we have to do. So here there are recovery techniques that is called as log-based recovery. The log is a sequence of log records which records all the update activities in the database. There are several types of log records which are written in the system. Means log क्या है? Sequence of log records. जो हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं वो सारे रिकॉर्ड्स इसमें है, जो विच रिकॉर्ड ऑल द अपडेट एक्टिविटीज, जो सब ये सब रिकॉर्ड करता है. एंड देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स व्हिच आर रिटन इन द सिस्टम लॉग. एक्चुअली सेवरल टाइप्स ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स मींस कौन से होते हैं, एक्चुअली इंसर्ट लॉग रिकॉर्ड, अपडेट लॉग रिकॉर्ड, डिलीट लॉग रिकॉर्ड, ऐसे होते हैं. तो इंसर्ट लॉग रिकॉर्ड मींस all the insert command will get stored into that insert log record. All the update, suppose we will give update command, so all those update command will get stored into that update log record. Okay, but हमको इतना separate outly नहीं है, but at least just I am telling that which are the types of the log records. An update log record has the fields given as follows. अब update log record में क्या रहता है that we will see. Okay. So when any transaction starts in the log record, we will get TI start. I stands for T1, T2, T3, whatever it is. अगर T4 start है तो T4 start will be there. Okay? अगर transaction start होता है तो log में ये सब जाएगा कि TI start means, for example, T4 is starting, then T4 start gets inserted into this update log. We are talking about update log, update type of log record, not insert and delete. Okay? Then TI, XI, V1, V2. TI means this transaction number, XJ means that is the data object or data item A, B, C, D or X, Y, Z. Okay, and V1 and V2. As this is the update log record, so V1 and V2 means the value. V1 means the value which is present in the table before the updation, and V2 is the value which is after the updation. कि आपने अपडेट करने से पहले वैल्यू कौन सी थी वो V1 में रहेगी, और अपडेट करने के बाद कौन सी वैल्यू होगी तो वो V2 में स्टोर होगी. दैट वी विल सी द एग्जांपल ऑफ दिस. देन TI abort, अगर वो ट्रांजैक्शन abort होता है
हम rollback command देते हैं या because of any reason, so that transaction gets aborted, then ti abort will be gets inserted into that update log record. तो t4 abort. अगर वो ट्रांजैक्शन कमिट होता है, हम कमिट कमांड देते हैं, तो लॉग में क्या जाएगा, ti कमिट. ये सीक्वेंस नहीं है, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स कि स्टार्ट होता है तो ये कमांड जाएगी, अगर अपडेट कमांड देते हैं तो ये कमा होगी, अगर अबॉर्ट देते हैं तो ये इंसर्ट होगा, और अगर कमिट देते हैं तो ये इंसर्ट होगा. दिस इज नॉट अ सीक्वेंस. ओके, so the log contains a complete record of all the database activity, so the size of the log will become very long. ओके, अब हर कमांड उसमें इंसर्ट होगी तो साइज ऑफ द लॉग विल बिकम वेरी लॉन्ग. हमको पता ही है हमारे फोन में अगर हमने उसको डिलीट नहीं किया तो the size gets increases. Now there are two techniques for using the log to ensure the transaction accuracy. There are two techniques. This is called as deferred database modification, and second one is immediate database modification. So you have to remember these two names properly. Okay, so now we will see these two techniques detailed one by one. Deferred database modification. So in this deferred database modification, we can only apply the redo statement. Only redo apply कर सकते हैं हम. Okay, and in the immediate database modification, we can apply undo as well as redo both the commands. Okay, redo means जो अभी मैंने किया है वो फिर से करो, and undo means don't do this one. Okay, so you have to remember that is DR. DR means in deferred we have to do redo, we can apply redo statement or redo command. इसमें से याद रखो एक ही कुछ तो. Now we will see. Let T1 be a transaction which transfers ₹50 from account A to account B. So T1 में ये हो रहा है, read A equal to A minus 50, write A. Read B equal to B plus 50, write B. Then T2, what T2 is doing? Read C equal to C minus 100, write C. Okay, so now these two transactions are executed. These two transactions are executed serially in the order T1 followed by T2. Okay, the initial values of accounts A, B, C are 100, 200, 500. Means first T1 is getting executed, then T2 will execute, and the original values of A, B, C are, these are the data item name. Okay, so A, B, C are 100, 200, 500. We have to remember these values, original values. Then see here, according to this, what will gets inserted into the log, that we will see. As soon as the transaction start the execution, it gets inserted that T1 start. T1 जैसे start होगा, क्या होगा? T1 start this gets inserted into this log. Okay, अब next क्या होने वाला है? A equal to A minus 50, right? Okay, so A की वैल्यू क्या होगी अब? 100 minus 50, 50. So directly जो वैल्यू उसके अकाउंट में रहेगी अभी, वो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी. कि A की वैल्यू क्या रहेगी? T1 में A की वैल्यू क्या हो गई अब? 50, because 100 minus 50, 50. जो उसका अकाउंट में बैलेंस रहेगा मीन्स वो यहाँ पे दिखेगा सीधा. देन रीड B इक्वल टू B प्लस 50, राइट B. ये तीनों का फाइनल कैलकुलेशन जो रहेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा. सो T1 B 250, T1 B 250, एंड देन कमिट. राइट है इसलिए वहां पे कमिट जाएगा. ओके, फॉर दिस होल ट्रांजैक्शन. सो कमिट, सो T1 कमिट. आफ्टर दैट T2 will start the execution. जैसे ही वो पहली इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा. ओके, सो T2 स्टार्ट मींस T2 स्टार्ट हुआ था या हुआ है. देन read C equal to C minus 100 and write C. So C minus 100 means 500. 500 minus 100, that is 400. So the value of C will be 400, and then T2 commits. So these are the contents of the log for transaction T1 and T2. So are you getting first of all these values of log? Means फाइनल वैल्यू जो रहेगी उसके अकाउंट में प्लस या माइनस होने के बाद अकाउंट में जो उसकी वैल्यू रहेगी फाइनल, दैट गेट्स स्टोर्ड हियर. ओके, सो फिर से एक्सप्लेन करना है.
बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट. इस पे फिर आगे के हमारे कैलकुलेशन है. See here again I'll explain you. T1 is given, read A equal to A minus 50, write A. Then read B equal to B plus 50, write B. And this is T2, read C equal to C minus 100, write C. Now these two transactions are executed serially in the order T1 followed by T2. Means first T1 gets executed and then T2 will get executed. The initial values of accounts A, B, C are rupees 100, 200, 500. Okay, तो ये original हमको याद रखना है. Now ये जब execute होगा T1 T2 तो which instructions or which values gets inserted, which record gets inserted into the log, that we have to see. Okay, कि log में कौन सा record जाता है, कैसे record जाता है. So when this T1 starts execution, just पहली instruction execute करेगा या start करेगा. So here T1 start, यानी T1 start हुआ है. Then read A equal to A minus 50, write A. So read A means 100, equal to A minus 50 means 50 and write A. Okay, so A minus 50 means अब balance कितना रहा account में? Originally it was 100, after transferring rupees 50. So 100 minus 50 means 50. तो आपके account में जो balance रहेगा, that value gets inserted here. That is A. T1, A, 50 means T1 transaction में A की value 50 है. In the same way for B, read B equal to B plus 50, write B. Okay, so अब कितनी होगी B की value after calculations? Originally it was 200. Now 50 gets added, so it becomes 250. So T1 B 250. Then T1 commit हो जाएगा वो. So means T1 is committed. So हमको ये log देख के पता चलेगा कि T1 was started as well as T1 was committed. Now for T2, same for T2. Read C. As soon as the T2 will get started, this instruction gets inserted into the log that T2 start, and T2 start हुआ है. Then read C equal to C minus 100, write C. Now the original value of C is 500, so 500 minus 100, 400. So T2 C, 400. So T2 transaction में C की value 400 हुई है, and T2 committed. T2 commits. Okay, so in this way the contents of logs are here. Now the recovery procedure. Now we will see the recovery procedure कैसे होगी. The recovery procedure is redo in bracket T1. Suppose we want to redo the T1. Okay, why redo the T1? We have to redo those transactions which have started as well as committed. We can do redo only on that transactions only. जो start भी हुआ है और commit भी हुआ है. Okay. So redo T1 sets the value of all the data items updated by transaction Ti to the new values. Redo means new value. Okay. So ये जो value A की 50 that I will explain you again. The redo operation must be idempotent. The redo operation must be idempotent. That is, executing it several times must be executing at once. अब देखो यहाँ पे देखो. Suppose imagine that this T1 gets fail हो गया, undo means roll back हुआ या कुछ हुआ, system crash हो गई means in short. Okay, हमने ये किया था but हमारी system crash हो गई. Okay, तो हम क्या करेंगे अभी, ये जो log है हमारे पास, इस पे से हम उसको ये सब हम redo करेंगे. Okay, redo because we are using this which technique? Deferred technique, deferred database modification technique. So in this technique we can redo only. Okay, so redo का rule क्या है कि if the transaction, any transaction, if it is started as well as committed, if it is means in short if it is committed, then only we can redo it. Started as well as committed, then we can redo it. अब यहाँ पे दोनों transaction redo हुए हैं. हमारा क्या हो गया, सिस्टम क्रैश हो गई, तो ये जो हमने कैलकुलेशंस किए थे ये तो हमारे चले गए रैम में जो थे, अब हार्ड डिस्क में लिखे नहीं थे हमने. ओके, रैम में थे, तो ये सिस्टम क्रैश हो गई तो वो तो सब चले गए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उसको रिकवर करेंगे. Now how to recover? We will execute this command. T1 start means we come to know here that T1 has started. In T1 A50, the meaning is that the value of A was 50 finally. So A की value 50 हो जाएगी.
गेटिंग? A की वैल्यू 50 हो जाएगी विच इज करेक्ट. देन B, 250 यानी B की वैल्यू 250 हो जाएगी. ओके. देन T1 कमिट, T2 में स्टार्ट हुआ था, ये हमको यहाँ से पता चलेगा. देन T2 C 400, C की वैल्यू 400 हो जाएगी, रीडू करेंगे हम तो. ओके. एंड T2 कमिट्स मींस वो कमिटेड था. मींस अभी यहाँ पे हमको ये हमारा सिस्टम क्रैश भी हुआ था, ये वैल्यूज हमारी सब चली गई थी, फिर भी हमको वापस मिली. A की 50 मिली, B की 250 और C की 400 विच इज करेक्ट. नाउ the redo operation must be idempotent, that is executing it several times must be executing it at once. means इसको आप चाहे कितनी भी बार एग्जीक्यूट करो आपको वही वैल्यू मिलने वाली है. ऊपर कैसे होता था, एक बार first time we have subtracted 50, so 100 minus 50, but again when we will re-execute it, again 50 minus 50 means 0, means here we are getting the wrong result. Okay, but from this log अब फिर से एग्जीक्यूट करो उसको, ti start A50, B250, C400, यही वैल्यू मिलने वाली है आपको, चाहे आप कितनी भी बार उसको एग्जीक्यूट करो. मींस यू आर गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट और करेक्ट वैल्यूज एवरी टाइम. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, सो नाउ लेट्स सी द हाउ ऑपरेशंस आर रिटन. सो ti start, T1 start, T1 A50, T1 B250, T1 commit. तो commit जब होता है ये, तब वो फिर हार्ड डिस्क में जाएगी वैल्यू. गेटिंग? मींस अब जब कमिट करेंगे तो वो वैल्यू हार्ड डिस्क में जाती है, स्टोर होती है. सो नाउ वी विल गेट द डेटाबेस वैल्यू. डेटाबेस में जो स्टोर रहेगी वैल्यू A equal to 50, B equal to 250. We will get the database in a condition that C equal to 400. ये कमिट होने के बाद वो डेटाबेस में जाती है. Are you getting this? Or I should okay, now I'll ask you what are given. T1 250, B 250. Now T1 here in this example T1 is started but it is not committed, so can we redo it? ऐसे एग्जांपल है हमको कि हमको अंडू करना है या रीडू करना है या क्या करना है. So as now we are using only this deferred database, so here we can apply only redo, not undo. Okay, so just tell me that in this example, first example, okay, T1 start, T1 A50, T1 B250, can we redo it? redo कर सकते हैं क्या? Yes, ma'am. redo हम कब कर सकते हैं? Yes, Ganesh, please repeat. Can we redo it? Yes, ma'am. Yes. When we can redo it? What is the rule? Okay, it's no problem. Very good. At least you have replied. Okay, so no problem whether it is correct or whether it is wrong. But what condition I told you? When we can redo it? If and only if that transaction is started as well as committed. अगर commit हुआ है तो ही हम उसको redo कर सकते हैं. Getting? अगर वो commit हुआ है तो ही हम उसको redo कर सकते. commit हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू सेव की थी हुई थी, मींस दैट इज द मीनिंग कि सेव हुई थी, बट उसके पहले वो बीच में क्रैश हो गया, बट हमको सेव करनी थी, मींस ये सेव हो गई थी. सो हियर वी कैन नॉट अप्लाई द redo because it is started, transaction is started but not committed. So no problem. Well tried, you have well tried, no problem. आपने आंसर दिया, यही बहुत बड़ी बात है. Okay, so here we cannot redo it because it is started but it is not committed. Okay, now the next example. T1 start, T1 A50, T1 B250, T1 commit, ये पूरा एक ही है यहाँ तक. T1 commit, T2 start, T2 C 400. Now which transaction we can redo and which transaction we cannot, means redo?
अब यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2, एक कमिट हुआ है एक कमिट नहीं हुआ है, तो हमको सेपरेटली बताना पड़ता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन वी कैन रीडू एंड विच ट्रांजैक्शन वी कैन नॉट रीडू. सो कैन यू टेल मी एनीवन which transaction we can redo and which transaction we cannot redo? T2 cannot redo. Yes, very good. And T1? Redo. Yes, very good. Other students? Is it correct? Is it correct? देखो कंफ्यूज होने की तो कोई बात नहीं है. What is the rule? The transaction which is started as well as committed. Main commit पे हमारा जोर है कि if it is committed then only we can redo it. Okay? So here we can redo T1 but we cannot redo T2 because T1 commit हुआ था. अब जो वैल्यू मैंने सेव की थी वही तो मैं उसको वापस डालूंगी ना डेटाबेस में. जो वैल्यू मैंने टाइप की थी सेव नहीं की थी वो नहीं जाएगी डेटाबेस में. दैट इज अ सिंपल मीनिंग or simple concept. Okay, so what you have to remember, if it is started as well as committed then we can redo it, otherwise not. Okay, and here now T1 start, T1 A50, T1 B 250, T1 commit, T2 start, T2 C 400, T2 commit. So now which transaction will be commit, we can redo it, and which transaction means what about T1 and T2? Anyone? Tell me about T1 and T2 separately. Can we redo T1? Can we redo T2? Sakshi, Saili. Wrong to wrong चलेगा, no problem, but at least you have to try. क्योंकि आगे एग्जाम्पल से you have to tell there that whether what you can redo and what you cannot redo. Okay, Ganesh, Shri. Both. Both? Ma'am, both. Yes, ma'am, both. T1, T2. I cannot hear. Huh? I cannot hear properly actually. Ma'am, we can redo both T1 and T2. Yes, yes. Okay, yes, very good. We can both redo T1, redo T2 because both are committed. Okay? Okay, very good. Now let's start the next technique and then we will see the examples. Okay? So immediate database modification. In immediate database modification, we can apply undo as well as redo both the operations. Okay? Undo as well as redo. So now here, see here. T1 start, T1 A 150, T1 B 200 250, T1 commit, T2 start, T2 C 500, 400, T2 commit. These are the contents of the log for transaction T1 and T2. Now see here, why here the two values are given? Can you guess? Here only in the above transaction only A50, this value is given, but here original value as well as the final value is given. This is original value, again the final values are given. Why the two values are given? Because here we have to apply undo also. We have to apply undo also. So means suppose I want to apply undo on the transaction T1 for example. Okay, for example, then what will happen when I will apply undo? I must know the previous value. Okay, undo का meaning क्या होगा कि suppose मैंने अभी 50 rupees 50 I have subtracted from 100. So अब मुझे वो नहीं करने हैं. अब मुझे अगर 50 नहीं करने हैं तो means A की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? 100. Okay,
So that's why the original values are given and the final values are given. Both values are given here. Means अगर मैं undo करती हूँ तो ये value आएगी V1, ये V1 V1 है और ये V2 V2. तो अगर मैं undo करती हूँ तो ये value set हो जाएगी और redo करती हूँ तो ये value set हो जाएगी. Okay. So here means if we are using immediate database modification technique तो log में ये values जाएगी. अगर हम ये transaction execute करते हैं ऊपर वाला ही. Okay. Same अगर हम transaction execute कर रहे हैं and suppose we are using this immediate database modification technique तो log में इस type के records जाएंगे. Okay, old value as well as new value also. Okay, so old value is used when we will apply undo and new value will be used if we will apply redo. Now the recovery procedure uses two steps here. And ऊपर कैसे था सिर्फ हम एक ही step कर रहे थे redo because in the default database we have to apply only redo. Okay, so here we were applying only in the recovery procedure we will only apply redo. But here we have to apply undo and redo. So in the recovery process again there are two steps. Undo TI restores the value of all data items updated by transaction TI to the old value. Means previous वो जो हमने किया -50 उसके पहले कौन सी value थी तो 100 थी. So that is undo TI. And redo TI sets the value of all data items updated by transaction TI. TI means anyone T1, T2, T3, T4 to the new value. मीन्स अगर हम undo अप्लाई करते हैं undo T1 सपोज तो क्या आएगा a की वैल्यू 100 ही आएगी क्योंकि हमने क्या किया था a पे 100 - 50 = 50 किया था. अब मुझे undo करना है अगर उसको तो क्या हो जाएगा वो वैल्यू फिर से ओरिजिनली 100 पे आ जाएगी. दैट इज ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू क्या थी उसकी 50. वैसे b के लिए ओल्ड वैल्यू क्या थी 200 और न्यू वैल्यू क्या थी 250 after adding the 50 rupees. Okay, so again the redo and undo operations must be idempotent to guarantee the database to be in the consistent state. Idempotent means you can execute it many times but you will get the same value. Okay, उसको आप चाहे कितनी भी बार execute करो. So now here tell me now in this first example T1 start T1A 150 T1B 200 250. Now what you will apply? We are talking about immediate database modification. Here we have to apply undo as well as redo. So now when the transaction started as well as committed we have to apply the redo, and if the transaction has started but not committed then we have to apply the undo. Okay, so tell me in this first example T1 start T1A 150 T1B 200 250. So what we have to apply here? Undo T1. Okay, we have to specify the transaction also because in the example there may be number of transactions. Yes, very good. Undo T1. Okay, because T1 is started but it is not committed. Now in second example, sorry, TI start TIA 150 T1B 200 250 T1 commit. Okay, then T2 start T2C 500 400. Now here tell me what we have to apply. T1 redo, T2 undo. Yes, very good. But the rule is here that we will see in the next point. But the rule is here that first of all we have to apply undo. Okay, first of all we have to apply the undo and then we have to apply the redo. Why that is given or we can understand in the next topic. Okay, so yes, it's very good. We have to undo T2 and we have to redo T1. From means actually from the in the backward direction we have to start it actually. Okay, so first of all we have to apply the undo actually. So why is that we will see in the next point. And now this is the last. So read this and tell me which we can redo and undo whatever it is. Anyone other than Ganesh? It is simple. Here both are committed, T1 and T2. कौन बताएगा?
Anyone can tell me? Shri, Ganesh, Sakshi, Saili. Ma'am, redo T1, redo T2. Yes, both redo. Yes, okay, yes, very good. Mika also very good. Okay, but means we have to tell properly that T2 commit. Redo T2, redo T1. Okay. Okay, yes, both will be committed here. But in the example, we have to write down separately for both the transactions. Okay, so are you getting this? So now, next point I will explain you in the next lecture because it is a little bit long. So I'll give you the idea of this checkpoint. Just okay. So checkpoint means what? See here. Now suppose this is the log file for transaction T1 and T2. But क्या होता है log record में? क्या इतने ही records रहेंगे क्या? बहुत सारे records होते हैं. Okay, and suppose it is multi-user system. Okay, तो उसमें तो बहुत सारे रहेंगे. सारे हर कोई means हर कोई user insert, update, delete सब transaction करता ही रहेगा. हम जब जैसे banking के करते हैं तो log में तो बहुत सारे ऐसे बहुत बड़ा log होगा. Okay, तो बहुत बड़ा log होगा और system crash होगी. तो हमको actually from the backward direction means नीचे से ऊपर तक हमको वो सब करना पड़ता है. ओके, तो मीन्स इतना बड़ा लॉग को हमको सब करना पड़ेगा ना, सब रीडू अंडू. तो उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी रहेंगे कि जो ऑलरेडी हार्ड डिस्क में जा चुके हैं, फिर भी हम उसको रीडू कर रहे हैं. गेटिंग? जो ऑलरेडी जा चुके हैं. अब लॉग में 100, 200 या 1000 भी रिकॉर्ड्स रहेंगे. तो इतना हमारी सिस्टम जब क्रैश हुई तो हो सकता है उसमें से मैक्सिमम जो कुछ रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी हार्ड डिस्क में गए हैं, फिर भी हम रीडू कर रहे. नो प्रॉब्लम, रीडू आप चाहे 10 बार करो, आपको आंसर उतना ही मिलने वाला है, ए का, बी का, सी का. ओके, तो उससे कुछ मींस आंसर गलत नहीं मिलने वाला 10 बार भी रीडू करोगे तो. बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग. फालतू ही हम कर रहे हैं. जो ऑलरेडी हो चुका है उसको हम फालतू ही करेंगे. ओके, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग. सो द checkpoint is there. Checkpoint क्या होता है कि after some specific time the checkpoint record gets added into the system automatically. ये जो log record है ना हमारे, तो इसमें सिर्फ इतना checkpoint लिखा हुआ इतना ही record इसमें बीच में insert होते जाता है automatically after some specific time. Okay, system insert करती है. तो फिर हमको उसमें अब steps दिए हैं कि हमको नीचे से स्टार्ट करके जो पहला चेक पॉइंट मिलता है उतने ही रिकॉर्ड, मैंने हमको पूरे 1000 रिकॉर्ड को रीडू अंडू करने की जरूरत नहीं है. हमको जो स्पेसिफिक है ऊपर वाले रिकॉर्ड्स उसको ही रीडू अंडू करना पड़ेगा, यानी हमारा टाइम बच जाएगा. दैट इज द कंसेप्ट. ओके, सो दैट चेक पॉइंट कंसेप्ट वी विल सी इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर. टुमारो आल्सो आई हैव लेक्चर एट 1 to 2. ओके, सो इन दैट लेक्चर वी विल सी दिस चेक पॉइंट. सो we will stop here.